So hi guys, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलेंगे गेटिंग ओवर इट। देखते हैं में कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैंने कई यूट्यूबर को देखा ऐसे क्या ही नहीं था, अपना कंप्यूटर तक तोड़ दिया था। देखते कितनी फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर भाई। हाँ ये देखो, तो आराम से बोला अगले चढ़ जा भाई। नहीं यार, कैसे चढ़ाऊँ उसको ऐसे? ये निकल, चढ़ भाई। हेलो बताओ। अरे यार ये टकले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता भाई ये गेम। चढ़ चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, बस बस बस। अंकल जी आप गिरना नहीं। तीन मछली कैसे हो ये? अरे यार ये नहीं बेकार है भाई। तो हाँ बस देखो, ये बढ़िया गेम है। ये दुनिया में सबसे घटिया गेम है ये। मैं बताऊँ, दुनिया में सबसे घटिया गेम है ये। चढ़ जा भाई, ये टकले चढ़ जा भाई। ये अटक गया। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. मार खा जाएगा तू। गिरना नहीं भाई। Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. निकल निकल निकल। टकला टकला कर ले भाई। भाई साहब अभी से मेरी इतनी सनक चल रही है। कह रही तो कहाँ पहुँचने के बाद कंप्यूटर तोड़ दो। मतलब अभी अपना फोन पटक दूंगा। ये चढ़ चढ़। In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them,
once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. खंबा तोड़ो यार ये पहले ये भिड़ जा बचा 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 बहुत सही भाई गंजे में थोड़ा दिमाग तो है चल चढ़ जा कूदी मार कूदी कूदनी मार नहीं आता ये बजा निकल निकल गंजा कुछ तो कर भाई चढ़ा 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 भाई एक चीज बता जिस बिल्डिंग बनाने में तू काम करता था उनका साथ तूने क्या बोल दिया ये तेरे को उन्होंने लोटे में बंद कर दिया कल एक फावड़ा देके वैसे कपड़े भी नहीं छोड़े थे ऐसा क्या कह दिया था भाई अजी भाई मैंने तुमको कह दिया था तुम लोग की कोई जरूरत नहीं तुम लोग के भैंस पूछ ये बोलेगा तो आदमी तेरे को दौड़ा के मारेगा नहीं तो क्या करेगा तो फिर भी लोटे में ही बन गया When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. देखो देखो नुबड़े हो क्या यार ना भाई मैं बहुत हूँ शक्ल देख के लगी था सॉरी भाई जल्दी जा अरे वाह अरे जाना भाई दो यहीं पहुँच गए आराम से भाई भगवान ने दो हाथ दिया उनकी थोड़ी मदद ले और फिर अपने आप को मटके से निकाल और आराम से जा भाई मटका नहीं निकल रहा हाथ में फावड़ा रखा कैसे निकलेगा भाई मैं इसको सोने में तोड़ दूँ मटका ऐसे ही पटक पटक के ओए ये लोहे का मटका है पटक पटक के टूटने लगा फिर तो लोहे की वैल्यू ही नहीं रही है भाई मेरे को लगा मिट्टी का है भाई तू तब से वहाँ फंसा हुआ तेरे को लगा मिट्टी का है हाँ भाई एक चीज़ है मेरे को तू बताना ये जो मटका है ना ये मटका तो Sorry about that. वैसे मेरे को एक चीज़ आनी थी ये मुझे बात कैसे कर पा रहा है पता नहीं भाई बात कर पा रहे हैं बस ये तो चल भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल तो सब्सक्राइब करना तब तक लिए नहीं क्या बोल तब तक लिए पीस आउट अब पूरे वाले वीडियो में छोड़ो ना यदि भैंस की अब मैं तोड़ दूँगा मोबाइल से बता ना निकाल जल्दी चल टक लिया मैं डांड भाई चलो आज वीडियो में बस इतना रख तू